bar with 4 bar with 1 bar and 3 bar. So it is equal to 2 bar into 1 bar and 4 bar into 3 bar. So now this is a multiplication in the with respect to the modulo 3 multiplication, and this is a modulo 6 multiplication. So again ये तो answer 2 ही आ जाएगा, and this is 4 3 12 0. So in this way I can multiply two elements. I can add two elements. So actually what is the claim? So which you can see what is the claim, that under this addition R1 and R2, under the defined addition and multiplication, it is a ring. And one can see easily why it is a ring. Because we already seen that this is a both operations are binary operations, both operations are good operations. Now one can see that 0 0 is the additive identity. कुछ चीजें मैं बता दूं. 0 0 is the additive identity, and since now 0 0 is the additive identity, now one can see, just try to see this thing, that actually both operations so both operations are depending on the operations on R1. कि ये जो addition है ये R1 पे addition है. Now we know that this is an associative operation because R1 is a ring, and this is an so this is an associative operation, this is an associative operation. So automatically this would become an associative operation, because associativity holds in the first coordinate and also associativity holds in the second coordinate. Because the operation in the first coordinate is an associative operation, operation in the second coordinate is an associative operation. तो जब भी आप एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट में associative है, तो overall it is an associative operation. Okay. In the same way, you can say that since this is an associative operation, since this is a multiplication in a ring R1, and this is an associative operation, so automatically this would become an associative operation. So one can see easily that since both associativity in each coordinate will automatically imply the associativity of the whole operation. And in the same way, if अगर ये हमें we know that, in the same way we know that this is an since in R1 addition is an abelian operation, and in R2 addition is an abelian operation, so automatically this is an abelian operation. So actually class one can see easily that both these both are associative operations. Both are associative operations, and this addition is an is a commutative operation. Now again we can say the same thing about the distributivity. We can say the same thing about the distributivity, because again if you class, what is the point that if you want to see that these two that distributive property holds, so how can you show that the distributive property holds? Because again whenever you will add and multiply elements, actually you are adding and multiplying them coordinate wise, and operations in both coordinates are distributive. In the first coordinate, addition and multiplication is a distributive operation, and also in the second coordinate, addition and multiplication is a distributive operation. So again, distributivity in both coordinates will imply the distributivity of the whole the big operation. Because what is the point that let's say थोड़ी सी मुश्किल हो रही है तो इसको मतलब परफॉर्म भी करके बता दो, that actually what is happening, that if you multiply this thing with this thing with CD plus EF, so how can you add things? So you can add things just with the help of the operation 1 here, and here sorry, CE, and here you can add DE with respect to the addition 2. Okay. Now जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे
how can you multiply? So you will multiply A with the first coordinate. So you multiply A with the first coordinate with respect to the multiplication of the ring 1 exists in the ring 1. And this is E. And also, इसको मैं ये bracket बना देता हूँ. And also you will multiply B with the second coordinate with respect to the multiplication in R2. Up now we know that both operations are distributive. So this since R1 is a ring, so the distributive property holds in R1. So that's why ये चीज क्या बन जाएगी? This thing is it is equal to A into C plus A into E, and also distributivity hold in R2. So this ये operation क्या बन जाएगा? B into D plus B into F. Now again class one can see easily that जब मैं इसको expand करके so after so how can I write this thing because what I want to give my A B C D, so I can write this thing in this way because just A C and AE. Okay, I can write this thing just, and now using the multiplication property, this thing it is equal to AC into BD, and this thing, sorry, AB into CD, and this thing it is equal to AB into EF. And this is the thing I want to show that if I multiply AB with the sum of this thing, so it is distributed on the whole sum. ये चीज शो करना चाहता हूँ ना that if we multiply, so this is a AB into ये वाला AB into ये AB हो जाएगा and this is EF हो जाएगा ना, क्योंकि AB अच्छा मैं इसको रीराइट किया था, actually it is AB into CD, it is AB into CD. Okay, so again ये तो property hold करिए that if you multiply this thing with the sum of this thing, तो वो क्या होगा, individually इससे भी multiply होगा, individually इससे भी multiply होगा. So class, what is the point? So again the distributivity, actually all these operations are inducing from operations in R1 and R2. So that's why अगर वहाँ पे commutativity, associativity, distributivity hold करिए, so it will also hold in the big thing, okay, in the direct sum. So overall one can see that this R1 direct sum R2 या R1 cross R2 कह ले, that this thing is a ring. Okay, one more thing, that if since I am assuming that both rings are rings with unity, so let's say this is a unity of R1 and this is a unity of R2, then this element R1 comma 1 R2, this is a unity of that is the additive multiplicative identity of R1. And in the same way, if both R1 is a commutative ring, that is the multiplication of R1 is a commutative operation, and R2 is a commutative ring, that is the multiplication of R2 is a commutative operation. So the multiplication on R1 and R2 is also a commutative operation. So if R1 and R2 are commutative rings, तो ये भी बात मरतबा मैथमेटिशियन इंटरेस्टेड रहते हैं कि एक तो इंड्यूस प्रॉपर्टी होती है जो सबसेट्स में होल्ड करती है. सो समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड दैट if R1 and R2 have a property, then will the property hold for R1 direct sum R2? For example, we know if R1 is a ring with unity and R2 is a ring with unity, then R1 direct sum R2 is a ring with unity, and this is a unity. If R1 and R2 both are commutative rings,
if R1 and R2, then R1 direct sum R2 is also a commutative ring. So we are also interested, जैसे in this way that, so, and why this is commutative, because if you multiply AB with CD, so here you need to multiply A with C and B with D. So since multiplication on R1 is a commutative operation, so this is equal to CA. Multiplication on R2 is a commutative operation, this is equal to BD. So this is equal to CB and AD. Sorry. And so this is equal to CD and AB. So class, initially what we have seen that we are interested that if R is a ring. So हम initially interested होते हैं hereditary properties में, that if we take some subset of R or some substructure of R, will that property holds also for that some substructure that या subring के ऊपर hold करेगी कि नहीं. So this is termed as a hereditary property. Or sometimes we are interested in this thing that if R1 has both R1 and R2 have some property. So we are interested that R1 direct sum R2 में भी वो property hold करेगी कि नहीं. For example, what we have seen that unity unity is a property, because if both are rings with unity, then R1 direct sum R2 is a ring with unity. If both are commutative ring, then R1 direct sum R2 is a commutative ring. Okay. Now what you can say about the integral domain? So let's say R1. So class, any problem? So if R1 and R2 both are integral domains, if both are integral domains, so what you can say? What okay, R1 and R direct sum R2 भी integral domain होगी या नहीं, ये क्वेश्चन है. No. क्यों? Suppose if एक example की Z2 and I guess Z3 की थी, वो आपस में integral domain होते हैं, जब multiply करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो integral domain. नहीं तो क्यों? divisors आ जाएंगे. तो फॉर चले आपने Z2 Z3 की एग्जांपल कि R1 it is equal to Z2. Okay. ये so what you can say कि ये अगर मैं लूँ Z2 क्रॉस Z3 लूँ, ये इंटीग्रल डोमेन होगा. ओके अगर आपको आइडिया है कि इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो व्हाट यू नीड टू शो? You need to show that there exist two elements which are zero divisors, that there exist two non-zero elements such that their product is equal to zero. So this is a, so could you see any two elements here such that the two non-zero elements here such that their product is equal to zero? Just try to identify. चलिए मैं elements आप लोग के लिए लिख देता हूँ. देखिए किस तरह एलिमेंट्स आएंगे. यहाँ पे पहले जीरो आ जाएगा, जीरो के साथ आपके साथ 3 के एलिमेंट्स आ जाएंगे. और फिर 1 के साथ Z3 के एलिमेंट आ जाएंगे. सो से देयर आर 6 एलिमेंट्स हियर. तो अब तो आपको नजर आ जाना चाहिए कि देयर एक्सिस्ट टू नॉन जीरो एलिमेंट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. ये ले, मल्टीप्लाई दिस एलिमेंट विद दिस एलिमेंट. What would be the answer? 0. Although this is a non-zero element, so this is a non-zero element. This is a non-zero element. This is a non-zero element. But their product it is equal to. But their product it is equal to 0. So it shows that actually. So in general, is that this thing is not an integral domain. So actually, what is the point that
not an integral domain. So what is the point that if you are working with two integral domains, it is not necessary that their direct sum is also an integral domain. And z cross z direct sum z भी दे सकते हैं. Again, you can take 1 0 and 0 1 and you can identify. So actually अब कुछ exercises ऐसी होंगी कि जिनमें अब आपको अच्छा one can see अच्छा इसमें से आप अच्छा ये तो हो गया. अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ. Okay, we know that this is not an integral domain. Now try to identify that which elements are zero divisors here. कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे जीरो डिवाइजर्स होंगे? जैसे 0 1 1 0 तो नजर आ गया. और कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो जीरो डिवाइजर मौजूद होगा? बिकॉज ये कुछ एक्सरसाइजेस होंगी कि आपको रिंग्स के डायरेक्ट सम दिए होंगे और आपको वहाँ पे जीरो डिवाइजर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यूनिट्स एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. 0 2. तो व्हाई यू आर सेइंग 0 2 इज अ जीरो डिवाइजर? देखिए whenever you will take an element such that its one coordinate is equal to 0. देखिए दोनों coordinate 0 हो गए फिर तो 0 हो गया ना उसमें तो. So we are not looking for a zero element. So whenever you will take an element किसी भी एग्जांपल में तो z2 क्रॉस z3 है. डायरेक्ट सम ज्यादा भी हो सकता है, z2 क्रॉस z3, डायरेक्ट सम z6. So whenever you will take an element such that one of its coordinates, at least one of its coordinates is equal to 0, then actually this is a zero, because whenever आपके पास टाइप का एलिमेंट है you can आप इसको इस टाइप के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके you will get 0 0. So actually ये इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे ये क्या होंगे? सारे के सारे जीरो डिवाइजर्स. Because whenever you have an ordered pair or an n tuple such that at least one coordinate is equal to 0. So आप एक ऐसा n tuple बनाएं कि जिसके बाकी सारे जीरो और सिर्फ उसका जहाँ पे जीरो उसकी जगह 1 ले लें या और भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लें. जरूरी है 1 लें. You can take any non zero element here. You can take any non zero element here. Okay. Okay. Take. So what is the logic? For example, अगर this, if you are working with 3 rings, so this is a zero divisor. Why? Because you can multiply. Just take यहाँ पे कोई एलिमेंट लें और यहाँ पे 0 लें. Okay, after multiplying this element, you will get a 0. So in this way, if you are working with a direct sum of rings, so in this way you can classify zero divisors. So otherwise, अगर आप इसके अलावा कोई एलिमेंट लेंगे, let's say 1 1, 2 लेंगे. So in the case of 1, 2, since 1 को किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके 0 नहीं कर सकते, 2 को किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके 0 नहीं ले सकते. So that's why this 1, 2 is not a zero divisor. In fact, you can show in at least in this case, you can show that 1, 2 is a unit. Okay, so actually this is an example. Now we will discuss a property of a zero divisors of an integral domain. So class, what is the motivation of integral domain? Because what we want to see that if the product of two things is equal to 0, so at least one thing should be equal to 0. So we will see that simple properties, actually अगर आप non integral domain के साथ काम करें तो उसमें कई simple properties hold नहीं करते. For example, let's say an integral domain में hold करती हैं. So what is the next theorem? That cancellation property. That cancellation property holds in the case of cancellation property holds in the case of integral domain. So for example, if you are working with Z8, we know that this is not an integral domain. Okay. अच्छा, वैसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? वैसे आपको आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि if A B it is equal to AC, तो what it is और A is non zero, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? जनरली आप रियल नंबर के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो एक्चुअली आप लोग हमेशा ये काम करते हैं ना, कैंसिल A with A, you will get B with C. So this is your expectation, and this is a cancellation property. So this is your expectation. So first I will show you an example in which this property doesn't hold, कि वहाँ पे cancellation hold नहीं कर रहा होगा. And then I will and then there is a very simple theorem which shows that if you are working with an integral domain, then this cancellation property holds. So actually class, this is the cancellation property.
This is a cancellation property. So now this example shows you that cancellation property may not hold in the case of integral domain. So for example, यहाँ पे आप क्या ले लें, a को आप 2 ले लें, b को 4 ले लें, और आप क्या ले सकते हैं, और c को इस तरह, ओके 2 टाइम्स 3, अच्छा चलेगा 2 टाइम्स 3 b को 7 ले लें, ओके. So just आप a into b करेंगे. What is the meaning of this thing? 2 times 3, it is equal to 6. And a into c करेंगे, it is equal to 2 times 7, which is equal to 14, and 14 and it is also equal to 6. So actually this shows that ab it is equal to ac. But here one can see, but it doesn't imply that b, which is equal to 3, is not equal to c, which is equal to 7. So actually this shows that cancellation property. So this thing shows that cancellation property. So this example shows that cancellation property doesn't hold in C8, which is not an integral domain. So the next theorem shows you that if you are working with an integral domain, then cancellation property will hold. So the statement का जो theorem की है, that let A, B, C, let A, B, and C belong to an integral domain if A is not equal to 0 and AB it is equal to AC, it implies that B it is equal to C. So this is the theorem. So what is the proof? It's not very difficult, because here this is your assumption. So this is your assumption. So this is your hypothesis. This is your assumption that you are working in an integral domain, and this is your conclusion. So using the hypothesis and the assumption, try to prove the conclusion. So if you are working with this thing, and this is also your hypothesis. So if AB it is equal to AC, then you can say take C on the right hand side. So you can write this thing AC in this way. Now using the distributive property, because why you can take this thing on the left hand side, because you multiply with the additive inverse of this thing. Now using the distributive property, you can write this thing in this form. Now we know that this is a non-zero element. So in an integral domain, if product of since R is an integral domain, since R is an integral domain, and product of two things is equal to 0, and one thing we know is not equal to 0. So it implies that B minus C should be equal to 0, which implies that B is equal to C. So class, here we are using that R is free from zero divisor. There are no zero divisors in R. So if there are no zero divisors and product of two things is equal to 0, and we are sure the first thing is not equal to 0, so then the second thing should be equal to 0. So it implies that B is equal to C. So this is a simple proof. So actually I will use this thing in some proofs. So now next we have, after the integral domain, we have a concept of a field, and then we will see that what is the relation between the field and an integral domain. So one can see that a field, again, it is a commutative ring. A field is a commutative ring with unity such that every non-zero element
is a unit. So this is a, so one can, what you can say that if, so simply what you can say that if we have F is a field, so F is, so one भी F में होना चाहिए, F commutative ring होना चाहिए, that F is a commutative ring, F is a commutative ring. और जब मैं यूनिट्स ऑफ F निकालूं तो क्या आने चाहिए सारे, यूनिट्स ऑफ क्या होंगे, non-zero element. Every non-zero element is a unit, so it is should be equal to F minus 0. So actually you can identify this thing as a field. So example में देख लेना that अब Q is a field because whenever you will take a rational number A over B, तो इसका multiplicative inverse क्या होगा, B over A. In the same way, R is a field, C is a field. Okay, non-example. Z is not a field because 1 and minus 1 are civil units होते हैं. Z is not a field. So actually this is the first example which shows you that although Z is an integral domain, but Z is not a field. So one thing you can say that any integral domain is not a field. What you cannot imply directly that any integral domain is not a field. But what about the other part? What you can say about this thing? A field is an integral domain. And what is the proof? Again, what is the main difference if you compare the definition of the field? So, and the definition of an integral domain. So in the case of an integral domain is free from zero divisors. So integral domain की property क्या होती है? It is free from zero divisors. And in the field, हमें सिर्फ first few properties तो same होती हैं. So we just need to show that if every element is a unit, then it should be free from zero divisors. And field में क्या होता है? Every non-zero element is a unit. First two properties एक जैसे होती हैं. Both are commutative ring with unity. But in the case of integral domain, every integral domain is free from zero divisors, and in the field, every non-zero element is a unit. So if I want to prove this fact that a field is an integral domain, so what I need to show? That I need to show, so what is my claim that if I say that a field F is an integral domain, so I need to show that F is free from zero divisors. S is free from zero divisors. So for this purpose, what I need to show, if अगर मुझे किसी चीज को zero divisor show करना है, तो I will take two arbitrary elements such that their product is equal to 0, and I will show that at least one element it should be equal to 0. So in the proof, so what I let A and B are element in F such that A is not equal to 0 and AB it is equal to 0. So अब मेरा क्लेम क्या होगा यहाँ पे, यानी कि ये खैर ये तो कंक्लूजन होगा. अब मैं अगर मुझे अब शो करना है कि if I want to show that A is not a zero divisor, so what I need to show? So A is not a zero divisor. It is equivalent to show that if A is a zero, it is equivalent to show that B is 0. तो ये चीज मुझे क्या करना है, शो करना है, और बहुत इजी है. Because what I am assuming that A is not equal to 0 and the product of AB is equal to 0. So in order to show that this non-zero element is not a zero divisor, I need to show that B is equal to 0. And what is my assumption?
that both are sitting in F, where F is a field. So field में हर non-zero element क्या होता है? Since A is a non-zero element of F, it implies that A inverse is an element of F. That is, A is a unit. Okay, that is, A is a unit. So अगर A unit है और A inverse exist कर रहे हैं, multiply A inverse on both sides. So multiply A inverse on both sides of this equation. What you will get? B is equal to 0. Which prove the fact, which shows that A is not a 0 either, and which shows that that F is an integral domain, because now we prove that F is free from zero divisors. Okay, class. So easy proof. And but we know that in general the converse is not true, that any integral domain is not a field. But in we already know that what you can, but now we are we'll try to prove the converse, but in a weak sense, कुछ हमें condition लेके apply करना पड़ेगा. So अब आप ये मुझे example दें कि अब तक मैंने जितने भी field की example ऊपर दी हैं, they are infinite rings. Infinite mean that there are infinite number of elements. Infinite number of elements in QRC. So now we already know an example of a field which is a finite ring. हम लोग को पता है ZP. So because मैंने आप लोग को proof generally मैंने आपको proof करके दिखा दूंगा ZP में जो उसके units होंगे वो क्या होंगे. इसके जो units होंगे वो these are non-zero elements such that their GCD with P it is equal to 1. And you know that if with P it is equal to 1, so you know that everything which is less than prime it is relatively prime. So actually this is equal to ZP minus 0. इसमें सारे के सारे आ जाएंगे. It is equal to ZP minus 0. So in ZP we know, मैंने आपको already वो हमने last class में किया था कि हम किस तरह से हम इसके units find out करेंगे कि why the GCD condition is the essential, is the sufficient and necessary condition for an element to be a unit. So that's why this thing simply implies that ZP is a field. ZP is a field, and we also know that ZP is an integral domain. So, and it is an integral domain. So actually it shows you something that, okay, if you are working with finite integral domain, then it may be a field, because we already proved that ZP is a field, and now it proved that ZP is an integral domain, and now ZP is a field. So in general, every integral domain is not a field, but a finite integral domain like ZP. A finite integral domain like ZP is a field. So what is the theorem? That a finite integral domain is a field. आप इधर आ गए तो उधर कौन है? Okay, so what is the proof? Now again, class, if you want to show that an integral domain is a field, so what you need to show? What is your claim here? What you need to show? That whenever you will take a non-zero element, so any integral domain D is a field. A finite integral domain is a field. So what is our assumption? That D is a finite set. Okay. और मेरा claim क्या है? That whenever I will take a non-zero element from D, so what I need to show? If I want to show that D is a field, so what is my claim then? ये मेरा claim है. Any non-zero element is a unit. So A is a unit. So ये मेरा claim है. And मेरी assumption क्या है? What is my assumption? That I am working. What is my assumption? That I am working with a D, which is an integral domain and finite. Okay, integral domain भी है, finite भी है.
इट्स मीन दैट मैं ये दोनों चीजें यूज कर सकता हूँ अपने थ्योरम के बुक में. आई कैन यूज द फाइनाइटनेस ऑफ डी एंड आई कैन यूज द फैक्ट दैट डी इज एन इंटीग्रल डोमेन. ओके, and what I need to show, I need to show that A is a unit. So for this purpose what I need to show that, अच्छा अगर मुझे show करना हो तो इसका मतलब क्या है, that is there exists an element B, वो element भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, such that product of A with B it is equal to product. ये मुझे show करना पड़ेगा. So what is my target? मैं अब जितना भी काम करूंगा, actually I will try to construct an element B such that its product with A is equal to 0, because I want to show A is a unit. So this is my task that I want to construct an element B such that its product with A should be equal to 1. क्योंकि वो बात पड़ता है चल कि आप ये काम क्यों करें. Okay, so this is my task. So अच्छा उसके लिए मैं क्या एक सेट डिफाइन करवाता हूँ. Now define a set, let's say DA. Define a set DA which contain all powers of A. All, let's say, positive powers of A कह लें, that A is, या non-negative powers कह लें इनके आप के n is greater than or equal to 0. चलें नेचुरल नंबर में फिर आप 0 अज्यूम कर लेगा, ठीक है. हाँ, और उसमें जरूरत भी नहीं है उसमें. Okay, let's find. Let's say this DA. So here it contains D1, A1, A2, A3 up to so on. Okay, that's fine. Now we know that this is a subset of D, and D is a finite set. D is a finite set. Okay, अच्छा ये सेट किस फॉर्म में नजर आ रहा होगा आपको, A1, A2, A3 up to so on, A100 and up to so on. इसमें different powers चल रही होंगी. Okay, but we know that D is a finite set, तो automatically DA भी क्या हो जाएगा, but DA is a subset of D and D is a finite set, so it automatically implies that DA is a finite set. Now class, if DA is a finite set, अगर थोड़ा सा आप लोग साइक्लिक ग्रुप पढ़ा हो तो if DA is a finite set and it contain powers of A, तो अब ये इसका मतलब that two different powers of A would be distinct, so would be same, sorry, two different powers of A. क्योंकि मतलब है कि देखें ये तो इन्फिनिट एलिमेंट्स चलते चले आ रहे हैं, आपको लग रहा है बजाय इन्फिनिट एलिमेंट्स है, बट एक्चुअली दिस इज अ फाइनाइट सेट. तो व्हाट इज हैपनिंग कि एक पॉइंट के बाद जो एलिमेंट्स है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, पावर्स होंगे वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे. सो देयरफॉर सो इट इंप्लाइज दैट टू डिस्टिंक्ट powers of A are equal. अगर आप इन्फिनिट सेट के साथ काम कर रहे हो देन यू कैन नॉट क्लेम, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग विद इन्फिनिट सेट तो आप एक ही डिफरेंट पावर लेते चले हैं, वो डिफरेंट आती चलेंगी. बट इफ यू आर ओके, वन मोर अजम्पशन आई हैव हियर कि मैंने यहाँ पे ए को ये भी अज्यूम करूँ कि 1 के इक्वल नहीं है, बिकॉज 1 इज ऑलवेज अ यूनिट. अगर मैं 1 ले लूंगा ना तो ये सेट बहुत ही ट्रिवियल हो जाएगा, सेट में सिंगल एलिमेंट रहेगा. सो दिस इज वन मोर अजम्पशन. Since 1 is a unit, always a unit, so that's why it's shown anyway. So two distinct powers of A are same. That is, AI is equal to AJ, where I is not equal to J. Okay, where I is not equal to J. Now from here, you can take. You can assume कि I less than J है या J greater than है, जो कोई भी assume आप कर सकते हैं. So here we are assuming that I is greater than J. So I can take this J on the right hand side, on the left hand side. So I will get this one. Now class, what is my task? So now I have this equation. Let's say this is the equation star. Class, what is my task? That I want to construct the inverse of A. That is, I want to construct an element B such that if I multiply that element with A, answer should be equal to 1. Now, क्या मैं उस using the star क्या मैं what is my task? I want to construct an element B here such that if I multiply with A, answer is equal to 1.
अब क्लास एनी आइडिया कि मैं बी को क्या सेलेक्ट करूं, कि मैं बी को क्या यूजिंग दिस स्टार, by using this star, because now this star is an equation which is a true equation. Now using this fact, मैं b को क्या सेलेक्ट करूं, मैं b को कैसे कंस्ट्रक्ट करूं कि a को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर क्या बना a, yes, because if I multiply this element with a, तो ये -1 पावर के लिए, बिकॉज here the power of a is equal to 1, तो ये दोनों ऐड होके पावर सेट होके कैंसिल कराएंगी, and this is I minus j, and now using a star what I can say that this thing is equal to 1. So if I will select b this thing, if I select b this element, then and multiply b with a, then answer it is equal to 1. Okay, so this shows that, so for आप ये कह सकते हैं that for b it is equal to a raised to the power I minus j minus 1. If I multiply a with b, then answer is equal to 1. And why this is happening? Because due to this fact. Yeah. ऊपर आपने लिखा है ना a I equals to a j, और उसके बाद आपने लिखा a raised to power I minus j equals to 1. 1. ये कैसे होगा? बिकॉज ये इसका तो देखें जो पावर्स हैं, ये तो हमने जस्ट क्या कहते हैं इस फैक्ट को मल्टीप्लाई करवाया ना कि ये सारी चीजें रिंग में ये सारी चीजें रिंग में मौजूद हैं, तो रिंग की जस्ट मैंने प्रॉपर्टीज को यूज इनके किया। देखें ए आई मैं जिस किस्म अच्छा यहाँ पे अच्छा एक बात आप लोगों ने शायद किसी ने नहीं पूछी कि यहाँ पे मैंने एक तो इंटीग्रल डोमेन का होना कहाँ पे यूज किया, बिकॉज आई एम वर्किंग विद एन इंटीग्रल डोमेन। मैं एक चीज को थोड़ा भूल गया और एक इस चीज को थोड़ा सा और एलिब्रेट कर लेते हैं कि बाय ऑल्दो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, क्योंकि पावर्स ए है तो लेफ्ट साइड में जाके जैसे पावर इनवर्स एन के हो जाएगी, बट बाय so where we use the fact, so actually since a क्या नहीं इंटीग्रल डोमेन में जीरो डिवाइजर्स होते हैं, so actually first try to see, और उस फैक्ट को होना जरूरी है। देखें हमें इस बात को भी मेक श्योर करना है, बिकॉज मैंने आर्बिट्री पावर्स ए की ले लिया ए आई ए जे, सो एक्चुअली इंटीग्रल डोमेन में एनी पावर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखें आप एनी वाई, बिकॉज इंटीग्रल डोमेन में कभी भी नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता। सो एक्चुअली एनी पावर ऑफ ए, what I am trying to say that actually this set doesn't contain zero element. Why? Because any power of a is not equal to 0. Because अगर power of a कोई 0 हो जाएगी तो वो चीज इंटीग्रल डोमेन में है, because a is a non-zero element. Since a is a non-zero element, since a is a non-zero element, आप यहाँ पे रिमार्क लिख लें that since a is a non-zero element, therefore any power of a, therefore any power of a is not equal to, and why this fact is important? Okay, any power of a is not equal to 0. Why? Because since so as D is an integral domain, as D is an integral domain. नहीं देखें, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो इक्वेशन है, हाँ अगर देखें एक जीरो हो जाएगी, देखें एक जब जीरो हो जाएगी तो आगे वाली पावर्स भी जीरो हो जाएंगी, तो ये जो असम्पशन है, ये जो असम्पशन है फिर हमारे पास ये होल्ड नहीं कर सकेगा ना। तो इस असम्पशन को होल्ड करने के लिए कि ए आई कोई डिस्टिंक्ट पावर्स ऑफ, और यहाँ पे भी जब मैं मूव करूंगा तो मूव करने में मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं नॉन जीरो एलिमेंट्स को मूव करके कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले वहाँ पे किया था। सो आई कैन मूव नॉन जीरो एलिमेंट्स। सो अगर एक पॉइंट के बाद लेट्स से ए रेज़ टू द पावर 100 जीरो हो जाए, तो 101 पावर भी जीरो होगी, आगे पावर 2 पावर भी जीरो होगी, तो इट्स मीन कि हमें पावर भी सारी डिस्टिंक्ट A1 से लेके A100 तक हमें डिस्टिंक्ट मिल गया और आगे सारे जीरो हो गया। तो ये हम असम्पशन अप्लाई नहीं कर सकते दैट टू डिस्टिंक्ट पावर्स ऑफ A आर जीरो आर इक्वल, सॉरी आर सेम। So here we are using the fact that any power of A is not equal to 0, because some power of A is equal to 0. So it's mean that A100 तक 0 हो गया, for example A100 तक 0 हो गया और आगे वाली सारी 0 हो गई, तो फिर आपके सामने इस किस्म की प्रॉपर्टी आना शुरू हो जाएगी कि A1 से लेके A100 तक तो सारी डिस्टिंक्ट हो गई, ये सारी डिस्टिंक्ट हो गई, ओके, और जैसे ही ये 0 हुआ तो आगे वाली भी सारी 0 हो गई।
So here you cannot imply that two different powers of A are equal to are same, और same भी उधर से of course वो सारी non zero भी. So that's why this assumption is needed. So हमने उसको मैं आपको directly बता नहीं सकता था कि where we use assumption, but now actually the assumption that D is an integral domain is required. We cannot solve this theorem. We cannot imply this thing. So only from the finiteness, कि हम सिर्फ finiteness से भी imply सिर्फ finiteness से हम ये imply नहीं कर सकते D के two distinct powers of A are same. We also use the fact that any power of A is not equal to 0. Okay. And now any power of A is since two distinct powers of A, and of course these things are not equal to 0. So that's why I can move this thing from here to here, to this right hand side, and I got this 1. And now we from this fact star we constructed the inverse, and which is B, and if you multiply A with B, answer is it is equal to 1. Okay, so any problem in the proof? So the proof में हमने दोनों assumption को use किया. So class, what we have seen that now at this point, what we have seen that if you are working with fields, so it is possible that maybe we have an infinite field like Q, R, and C. Maybe we have finite fields like ZP. And the order of ZP, order का मतलब जैसे group का order होता है, order of ZP, that is the number of elements in ZP कितने होते हैं? P होता है, P-1 होता है, P होता है, 0 भी तो होता है ना, P, it is P. So it's mean that we have a field of order P. So whenever I will say, okay, a field of order P, so you will always say that for every prime number I can construct a field. For example, whenever a prime number is given, 11 is given, Z11 is a field, 13 is given, Z13 is a field. But now what is the point that could we construct a finite field और एक field हो गई जो infinite type की field होगी. So now problem है कि could we construct a finite field? Could we construct a finite field such that finite field F such that its order is not a prime number? This is the point. Okay, for every prime number P, we can construct a field of that order. But now class try to understand the question that अब मैं जो non prime numbers हैं क्या उनके भी corresponding कोई field construct कर सकता हूँ? That let's say Z6 तो field नहीं है, integral domain भी नहीं है, because अगर कोई चीज integral domain है तो field भी नहीं हो सकती. So but for example क्या could I construct a field of order 6? Could I for Z4? Now we know that Z4 is not a field, so Z4 तो चला गया. But could I construct a field of order 4? Now the next question about 8, 9, इन सब जो prime हमारे पास नहीं है, तो question याद है कि उनके क्या उतने order की हम field construct कर सकते हैं कि नहीं. So first I want to give you an example. कि give you an example of field such that its order is not a prime number, because prime number के लिए काम कर सकते हैं. For every prime P, ZP is a field, so no problem. But if we are not working with a prime number, so could we construct a field? Because अगर हम field construct कर लेंगे तो automatically वो integral domain होगी. तो जो field की example है वो automatically integral domain की example है. So that's why the question is about the field. So अब मैं आपको एक example देता हूँ. Let's say consider this ring Z3 iota. Now Z3 iota contain elements which are in the form of A plus B iota, where A and B are in Z3. पहले ये बताएं इसका order क्या होगा? What is the order of Z3 iota? Yes, 9, because there are 3 possibilities for A and 3 possibilities for B, so there are total 9 possibilities. So 9 है. चाहे तो आप लोग कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है. एलिमेंट्स क्या होंगे? एक तो Z3 के एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 1 3, सॉरी 0 1 2. फिर आप डिफरेंट उसके साथ कॉम्बिनेशन यानी कि ले लें कि लेट्स से 0 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा,
and 2 plus iota, and then Z3 ओके। नेक्स्ट हमारे पास 0 के आयोटा के साथ कॉम्बिनेशन आ गया, अब 2 आयोटा के साथ कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, 0 plus 2 iota and 1 plus 2 iota and 2 plus 2 iota. So actually in this way that there are 6 elements, one can check. There are 6 elements. आ गए ना सर, सॉरी ये प्योरली आयोटा वाले ना, ये आ गए ना 0 plus iota और 0 plus 2 iota, ये तो हो गया ना वहाँ पे, किसी भी कॉम्बिनेशन में बना लें, that's not an issue. So one can see that there are 6 elements. Sorry, 9 elements. So there are 9 elements. Thank you. Okay, so what is my claim? What is my claim that this Z3 iota is a field? So अगर मैं इस चीज को प्रूफ कर लेता हूँ कि अगर मैं इसको फील्ड प्रूफ करता हूँ, now this would be an example of a field with 9 elements where 9 is not a prime number. So it shows that there exists a field with a non-prime order. So Z3 iota is a field. अब कैसे शो करेंगे, ज़ाहिर से पता है कि 9 एलिमेंट्स है तो आप 1 by 1 एलिमेंट्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं, 0 के तो नहीं कर रहे, 0 और 1 को तो वैसे ही आप छोड़ दें, बिकॉज 0 और 1 का तो हम लोग के पास 1 का तो इनवर्स 1 ही होता है, 2 को भी छोड़ दें, 2 का इनवर्स क्या होता है Z3 में 2 ही होता है, 2 into 2 ना 2 ही होता है। अब आयोटा को देख लेते हैं, 1 by 1 एलिमेंट्स को देख लेते हैं, टेबल भी बना के कर सकते हैं, मगर ये कि आप खुद चेक कर सकते हैं ये कॉम्पिटिटिव होगा, कॉम्पिटिटिव रिंग होगा, कोई जी आयोटा की तरह बिहेव कर रहा है, कॉम्पिटिटिव रिंग इंटीग्रल डोमेन है, सिर्फ मैं इनवर्स चेक कर रहा हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द इनवर्स ऑफ आयोटा? आयोटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? चलिए चेक कर लेते हैं, वन बाय, नहीं है समझ में आ रहा, मैं अगर इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बनेगा, और -2 की क्लास C3 में क्या होती है, तो इसका मतलब 2 आयोटा का इनवर्स क्या हो गया 1, और नहीं आयोटा का इनवर्स क्या हो गया 2 आयोटा, और 2 आयोटा का इनवर्स 1 हो गया, तो ये भी चलेगा, इसका मतलब ये और ये दूसरे के इनवर्स है। ओके, नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। अब मेरे पास क्या है 1 plus आयोटा, 1 plus आयोटा, सो इफ यू मल्टीप्लाई 1 plus आयोटा, लेट्स से मैं 2 plus आयोटा, चलिए पता है क्या आंसर होगा, 1 को 2 से करें 2 होगा, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आयोटा आएगा। ओके, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा आएगा, एंड देन आयोटा को आयोटा से करें तो क्या आएगा -1 आएगा। सो ये आ जाएगा 1 plus 3 आयोटा, और 3 आयोटा किसके बराबर होता है 0, तो ये 1 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1 आयोटा, 1 plus आयोटा 2 plus आयोटा, सो इट्स मीन दैट 1 plus आयोटा का इनवर्स क्या होता है 2 plus आयोटा। अब आखिरी में काम आप लोग खुद चेक कर लें कि 1 plus 2 आयोटा का इनवर्स क्या होता है, अब 2 plus 2 आयोटा होगा, you can check because it is 2, so if you multiply it is 2 आयोटा, और फिर 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें so you will get actually 4 आयोटा, and then if you multiply 2 iota with 2 iota तो it is -4, so ये हाँ, तो ये 6 ये क्या -2 plus 6 iota, 6 iota हमें पता है कि 0 के बराबर है, तो -2 and it is equal to 1. So simple, इतना मुश्किल नहीं है, one can check a hit and trial method. So it shows that every element, so whenever I will take a non-zero element, it has a inverse. It has an inverse. So every non-zero element is a unit. So which claims that मैंने पूरी so it claims that Z3 iota is a field, and Z3 iota is a field of order 9. चलें आप लोगों ने ये बात कर लिया, वैसे आप Z2 iota को भी चेक करने की कोशिश करें कि Z2 iota होता है क्या, बताएं अभी मुझे अपनी कॉपीज में कुछ चेक करें।
क्योंकि अगर वो फील्ड हुई तो ऑर्डर 4 की फील्ड हो जाएगी. Later on, I will show you that actually we can, whenever there is a finite field, so we can say something about its order. So it's what is 9? So 9 is a power of 3. 3 square is equal to 9. So later on, we will see that whenever we have uh, a power of prime, then we can construct a field of that order. So in fact, the order of every finite field is in the form of p raised to the power n. कि फील्ड का ऑर्डर या तो प्राइम होगा या प्राइम की पावर होगा. इनफैक्ट जनरली हम प्राइम की पावर ही करें. द ऑर्डर ऑफ फील्ड. सो ये अब इतनी थोड़ी सी देर में आएगी, इतनी जल्दी हम लोग अभी नहीं आएंगे. So we will feel this. So we will see this fact that okay, whenever we have a finite field, so if f is a finite field, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा p raised to the power n की फॉर्म में होगा, where p is a prime और n नेचुरल नंबर है greater than equal to 1. तो इस फॉर्म में होगा. तो we can always construct it. बट ये कि एक मेथड चले आपने देख लिया कि मैं ना z3 iota है, तो क्या पता if z2 iota is a field, then it would be an example of field of order 2 4, which is also a power of prime. मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ, साथ आप लोग चेक अपने लिहाज से करें, है कि नहीं है. तो इट्स मीन दैट एक्चुअली ओके, दिस इज एन एग्जांपल बट इट इज नॉट प्रोवाइडिंग अस a general way. क्योंकि अगर मैं या तो मैं ये काम ही करूं कि भाई अगर मैं z5 आयोटा ले लूं तो वो उसमें 25 एलिमेंट हो जाएंगे, तो इट वुड बी अ फील्ड ऑफ ऑर्डर. मगर ये काम नहीं चलना ना. इसका मतलब ये आयोटा वाली जो एग्जांपल है ये ठीक है, कुछ जगहों पे वर्क करे, क्या पता z5 आयोटा के लिए वर्क करे, इट वुड बी अ फील्ड ऑफ ऑर्डर 25, बट z2 के लिए वर्क कैन नहीं करे. But in general, I will show you later that we can construct a field of order 4. In fact, we can construct a field of p raised to the power n for any power of p theoretically. Rather computationally वो ज़्यादा आगे जा रही है. Okay, but I'm so यहाँ पे मैं remark लिख रहा हूँ and I'm hoping आप सब लोगों ने चेक कर लिया होगा that z2 iota is not a field. इंटेग्रल डोमेन होता ही है एक्चुअली. इंटेग्रल डोमेन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 या n क्या होता है, तो दैट्स व्हाई. तो इसी ये भी हो रहा था. इनफैक्ट इट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन. फाइनाइट है तो अगर इंटीग्रल डोमेन होता तो फील्ड भी हो जाता, तो नहीं है तो दोनों चीजें नहीं. ओके, नाउ one more theorem and then p prime and n greater than 1. Now what हमने अब तक पॉलिनोमियल रिंग्स अब तक ये हमने देख लिया कि कहीं हमने इंटीग्रल डोमेन्स की और फील्ड की एग्जांपल देख ली. पॉलिनोमियल रिंग्स को डिस्कस कर चुके हैं, बट ये कि इफ ये रिजल्ट है that if I want to characterize a polynomial ring that it is an integral domain or not, then with the help of its ground ring I can check. So if D is an integral domain, so class, what is the point that if D is an integral domain, then the polynomial ring over D is also an integral domain. So for example, z2x, zx, rx. So in the same way z iota x भी लगता है, या कोई भी z px ले ले, कोई भी z px ले ले. So ये सारे के सारे का है इंटीग्रल डोमेन्स and z px वगैरह. Okay, now if you want to prove this theorem, so it's also interesting रहता है इसका proof का. So if you want to prove this theorem, so you need to show that since our
first try to see that D is a commutative ring. ये तो शायद मैंने आपको बताया था कि हम polymer ring हमेशा commutative ring के ऊपर बनाते हैं, and polymer ring is also a commutative ring. So we already know that since one is an element of D, so one जो identity polymer होता है, it is also an element of D, because identity polymer क्या होता है कि constant term क्या होती है, 1 होती है polymer की, और बाकी terms क्या होते हैं, 0 होती है. So this is an element of dx. So we know that D is a commutative ring because polymer ring तो खैर हमने बनाया हमेशा commutative rings के ऊपर पे. So D is a commutative ring. So it implies that dx is a commutative ring. What we need to show that dx is free from zero divisors. So what is my claim that okay. So Ali and I, क्योंकि आप आए हैं इस क्लास में तो हम कोशिश करेंगे आप ये प्रूव करेंगे dx is free from, so you can आप बोर्ड यूज कर लें. आप लोग भी अपनी कॉपीज में शो करने की कोशिश करें कि हमें पता है कि डी के जो एलिमेंट्स हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसको ले लो करूं अगर सही है तो कि अगर कोई मैं दो एलिमेंट ले लेता हूं dx में से तो उनको मल्टीप्लाई कराता हूं और जीरो आंसर आ जाए तो एक जरूर जीरो होना चाहिए. हाँ. या एक को आप नॉन जीरो अज्यूम करके आप दूसरे को जीरो अज्यूम कर लें, प्रूफ करने की कोशिश करें. दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो लें, एक एलिमेंट को नॉन जीरो अज्यूम करें और फिर सेकंड एलिमेंट को जीरो प्रूफ करने की कोशिश करें. इन दोनों का प्रोडक्ट लूंगा, किसी भी दो randomly chosen element from dx का प्रोडक्ट लो तो उनके जो वेरिएबल्स होंगे या जो कोफिशिएंट्स होंगे वो इस तरह के होंगे समेशन ai bi where I belongs to n. और सही है, वो I belong वो हमें पता है कि सही है. अब चूंकि ये जो जितने भी प्रोडक्ट हैं all these products belong in D, है ना, सम है ये प्रोडक्ट सम. हाँ ये प्रोडक्ट का सम है लेकिन हर एक प्रोडक्ट जो है वो डी में बिलोंग कर रहा है. सही है. तो अगर ये सम जीरो होता है, अगर ये सम जीरो होता है तो इसका मतलब ये सारे जीरो होने चाहिए. क्योंकि तो मतलब है कि अगर सम जीरो से आप सारे इंडिविजुअल टर्म्स को कैसे जीरो अज्यूम कर सकते हैं. जनरली आप ये बात खुद बताएं कि देखा जाएगा कुछ चीजों का सम जीरो के बराबर है तो आप ये इंडिविजुअली सारी चीजें जीरो के बराबर है, प्रोडक्ट में टू सारी चीजें में. ये थोड़ा सा इसमें है कॉम्प्लिकेशन ना, अगर लॉजिकली क्या वैसे तो आप नहीं कह सकते हैं कि सम जीरो के बराबर है तो हर टर्म जिसमें इन्वॉल्व होगी वो सारी की जीरो के बराबर होगी. अच्छा, इसको मेरा अपना ख्याल यानी कि इसको आप ना करने की कोशिश करें कॉन्ट्रा पॉजिटिव से करने की कोशिश या करने की कोशिश करें या कॉन्ट्राडिक्शन से करने की कोशिश करें कि आप अज्यूम कर लें कि लेट से कि जीरो डिवाइजर मौजूद है और फिर आप कोई एलिमेंट ऐसे दो निकाल लें कि जो डी के अंदर जीरो डिवाइजर है. आप अज्यूम करने के dx में जीरो डिवाइजर्स हैं, यानी कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है, जीरो के बराबर है. फिर आपका आसानी से हो जाएगा. अच्छा देखें, अगर सम हमारे पास क्या कहते हैं जीरो के बराबर यानी क्या है, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई सारी टर्म्स यानी कि जीरो के यानी के बराबर. हाँ यही मैं बात कह रहा हूँ ना, आप शुरू के और आखिर की टर्म्स यानी के ले सकते हैं आप. बिल्कुल, फिर ये जीरो नहीं हो सकता. हाँ ये चीज, क्योंकि अगर ये यानी ये जीरो होने का मतलब है आइदर dn equals to 0 और dm equals to 0.
बिल्कुल हाँ इस तरह। लेकिन ये नहीं। तो और वाली टर्म भी ले सकते हैं। तो मैं चलें ली का प्रूफ को डिस्कस कर ले रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, ये डायरेक्टली करो तो थोड़ा मुश्किल होता है, कॉन्ट्रडिक्शन से आजाद हो जाता है। तो ऑन कॉन्ट्ररी मैंने अज्यूम कर लिया, थैंक यू। सो ऑन कॉन्ट्ररी assume dx is not free from zero divisors. So what is the meaning of this thing that जैसे ली ने कहा कि कोई f of x exist कर होगा am xm up to so on a naught and g of x with some bn xn एंड b1x प्लस b0। अच्छा हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों पॉलीमर्स नॉन जीरो है। अच्छा पॉलीमर्स नॉन जीरो है तो अब जाहिर सी बात है कि मैंने इनकी इसका मतलब ये कि और मैं इसको m डिग्री का पॉलीमर ले रहा हूँ और इसको n डिग्री का पॉलीमर ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि ये मेरे पास नॉन जीरो है। अगर नहीं होगा तो लेस डिग्री वाला ले लूंगा भाई। अगर पॉलीमर मेरे पास नॉन जीरो पॉलीमर है तो उसकी कोई ना कोई तो डिग्री होगी ना, कांस्टेंट पॉलीमर होगा। एंड दिस इज अ पॉलीमर ऑफ डिग्री n, सो दैट्स व्हाई मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि इनके जो xm के साथ जो कोफिशिएंट्स है वो नॉन जीरो नहीं होंगे। अगर ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो अगले वाले को नॉन जीरो ले लूंगा, कोई ना कोई एक कोफिशिएंट तो जरूर नॉन जीरो होगा ना, बिकॉज अगर पॉलीमर नॉन जीरो। ओके, सिंस बोथ आर नॉन जीरो पॉलीमर्स एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। अब जैसे आप इनका प्रोडक्ट कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे, सो ये वाली जो टर्म होगी am bn, बाकी तो बिकॉज यहाँ पे मेरी अजम्पशन है कि इस पॉलीमर को मैंने डिग्री, इसकी डिग्री m ले ली और इसकी डिग्री मैंने क्या ले ली, n ले ली, दोनों की डिग्रीज मैंने ले ली। ये तो याद होगा ना पॉलीमर की डिग्री क्या होती है, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर जो होती है इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो। तो अब इस जब आफ्टर टेकिंग द प्रोडक्ट जो इसकी जो हाईएस्ट कोफिशिएंट बनेगा, क्यों बाकी जो कोफिशिएंट बनेंगे सब लेस डिग्री के बनेंगे, तो हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या बनेगा, इस चीज का बनेगा प्लस और बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी और ये सारे क्या हो जाएंगे जीरो, और ये किसके बराबर होगा, जीरो पॉलीमर के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, जीरो पॉलीमर के बराबर होगा। तो इफ इट इज इक्वल टू जीरो पॉलीमर तो इसका मतलब ये कि ये वाला कोफिशिएंट भी क्या होगा, this coefficient is also equal to zero because this whole polynomial is equal to a zero polynomial. It means that every coefficient of this polynomial it is equal to zero, which implies that this thing it is equal to zero. Okay, which implies that this thing is equal to zero. Now we know that this is equal to zero, this is equal to zero, and their product is equal to zero, which is a and अच्छा ये अगर पॉलीमर ओवर डी है, ये बात भी याद रखिएगा कि यहाँ पे सारे ए आई डी से बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ पे सारे बीजेस भी किससे बिलोंग कर रहे हैं, डी से बिलोंग कर रहे हैं। तो वेयर इज द कॉन्ट्रडिक्शन दैट सिंस ए एम, सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, व्हाई दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, that since am is not equal to zero, since am and bn are in dn, or where d is an integral domain, so in integral domain it is not possible that the product of two non-zero elements it is equal to where d is an integral. So this is a proof. So class, this thing simply shows you that if you will construct polymer ring over integral domain, then it would be also an integral domain. So later on again ये फैक्ट हमारे पास यूजफुल रहेगा कि जिस अगर मैं पॉलीमर रिंग के ऊपर काम करूं तो वो इंटीग्रल डोमेन है। अच्छा ये वाला फैक्ट हो गया। अब यहाँ से अब हम लोग ये चीज अब करना है। अच्छा और सिंपल ये बात कह सकते हैं कि अगर नॉन इंटीग्रल डोमेन के ऊपर करूंगा तो वो खुद ब खुद वो पॉलीमर रिंग भी क्या हो जाएगा, नॉन इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो इट्स मीन दैट वी कैन इम्प्लाई two things. What is the first thing we can imply, that
if we are working that Z7, so we know that Z7 is an integral domain. So C7x, it is an integral domain. So it is an integral domain. And so if our polynomial ring over a non-integral domain, then the polynomial ring is also is not a. So we know simply that Z7x is an integral domain using the previous theorem. Since Z7 is an integral domain, so C7x is also an integral domain. And Z8 is not an integral domain, therefore Z8x is not an integral domain. देखो असल में हो नहीं सकता ना, उसकी वजह ये है कि कांस्टेंट्स तो वहीं से आ रहे हैं ना. देखिए Z8 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 और 4 को कांस्टेंट पॉलीनोमियल अज्यूम करो तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो वो पॉसिबल नहीं होगा ना. उसकी वजह ये है कि आप जो ग्राउंड रिंग के एलिमेंट्स हैं उनको कांस्टेंट पॉलीनोमियल, तो ग्राउंड रिंग में अगर 0 डिवाइजर्स हैं तो ग्राउंड रिंग के एलिमेंट्स को आप कांस्टेंट पॉलीनोमियल अज्यूम करके आप शो कर दो कि उस रिंग में 0 डिवाइजर्स मौजूद है. तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ही चल रहा. अच्छा, अब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस थिंग, जो मैंने शुरू में आपको क्लास से बताया था कि व्हाइल सॉल्विंग इक्वेशन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हमेशा फैक्टराइजेशन करके ऐसे निकाल लेते हैं, बिकॉज एट अ पॉइंट यू आर अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू 0. तो इधर द फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और द सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0. तो अब मैं एक इक्वेशन अज्यूम करता हूँ. ये इस इक्वेशन को हमने देखा था x² - 5x प्लस 6 इट इज इक्वल टू 0. सो नाउ इनिशियली मैं ये अज्यूम करूँ कि ये इक्वेशन Z6 में है. दोनों इक्वेशन को मैं इनिशियली मैं अज्यूम करूँ कि ये इक्वेशन Z7x में है. Z7x का मतलब क्या है, दैट दिस ये जो कोफिशिएंट है ये सारे Z7 में, ये भी 1 जो है यहाँ ये भी Z7 में. एंड नाउ अगेन एंड ऑल्सो आई एम अज्यूमिंग दिस द सेम इक्वेशन इन Z8x. Now this time coefficients are in, ये जितने कोफिशिएंट है किसमें बिलोंग कर रहा है, Z8 में बिलोंग कर रहा है. तो ध्यान में ये रहेगा कि if I am assuming the equation in Z8x, then coefficients are in Z8, and if I am assuming the equation in Z7x, then coefficients are in Z7. चलिए अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं. आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते थे, अगेन इसकी फैक्टराइजेशन करते थे. x - 2 into x - 6, sorry, x - 3 is equal to 0. Now since Z6 an integral domain, this is an element of Z7, so Z7x is an integral domain. So this is an element of Z7x and this is an element of Z7x, and Z7x is an integral domain. So product of two things is equal to 0. It implies that this thing is equal to 0 or this thing is equal to 0, and from here you compute it, and from here आपने इसके दो इसके रूट्स कंप्यूट कर दिए. x is equal to 2 and x is equal to 3. अब नॉन इंटीग्रल, सिंस Z8x is not an integral domain, so नॉट इंटीग्रल डोमेन होने की वजह से अब क्या एबनॉर्मलिटी आ रही है, आप लोग चेक कर सकते हैं. नहीं, दोनों 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है कि दोनों. आप देखें, लेट से आप देखें दोनों 0 भी हो सकता है और नॉन 0 भी हो सकते हैं. अगर दोनों 0 है तो ये दो रूट्स तो होंगे, आप चेक भी कर सकते हैं. मगर प्रॉब्लम ये है कि इसमें और रूट्स भी आ रहे होंगे. 2 और 3 तो है ही नहीं, और बता दो. आप 4 को चेक करें, देखें. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है. अच्छा, कैसे सॉल्व करते हैं, मैं समझ गया. आपने अगेन इसकी फैक्टराइजेशन करी, 0 के बराबर हो. ओके, अब क्या पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों 0 के बराबर होंगे, तो यहाँ से दो रूट निकल आए 2 और 3. बट ये भी तो प्रॉब्लम हो सकता है कि दोनों नॉन 0 हो और दोनों का प्रोडक्ट भी 0 के बराबर आ जाएगा. अच्छा, नॉन 0 होने में केसेस क्या हो सकते हैं कि इसको मैं 2 रख दूं और x - 3 को मैं क्या रख दूं, 4 रख दूं. अगर x - को 2 रख दूं तो यहाँ से रूट क्या निकल आएगा, 4, और यहाँ से रूट क्या निकल आएगा, 7. तो आप लोग चेक करें कि 4 भी इसका रूट है और 7 भी इसका रूट है. प्लग करके चेक कर लें. नहीं यकीन आ रहा था, प्लग करके चेक करें आप लोग कि 2 और 3 तो रूट सही इसके, 2 और 3 तो रूट सही, यानी कि यहाँ पे 2 आ रहा था ना, हाँ 3.
2 और 3 तो इसके रूट्स थे, सो यहाँ ये तो रूट्स हैं, एंड नाउ यू कैन चेक दैट 4 और 7 भी इसके रूट्स हैं। चेक कर, पॉइंट इनके ये है कि इस नाउ यू आर गेटिंग फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन you are getting more than 2 roots, and why this abnormality is happening? Since the polynomial ring, our polynomial ring is not an integral domain. So actually what you can say that, so what you can conclude that x square minus 5x plus 3x is equal to 0 in Z8x has more than 2 roots. Since Z8x is not an integral domain. वैसे आप लोग चेक भी कर लें इसको कि आप, अगर आप लोग को यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पे आप लोग, वैसे इस जगह भी चेक हो जाएगा, यहीं पे आप 4 पुट करें तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 पुट करें तो आप 4 आ जाएगा। तो वो दोनों आप इनको चेक कर सकते हैं ना, कि लेट से अगर मैं यहाँ पे मैंने 4 रूट निकाला, तो यहाँ पे मैं 4 पुट करूँ तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और मैं अगर यहाँ पे 4 पुट करूँ, क्या नहीं नहीं इसको, कि ये इसका रूट तो आना चाहिए ना, कि 4 को वैसे ही चले इसमें चाहे इसमें रख के चेक करें, यहाँ पे चेक करें इस वाली जगह पे, 2 आंसर आ रहा है। ओके तो हाँ, मैं कैलकुलेट तब भी इसके रूट्स मोर देन 2 आना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पे, कि x, अगर मैं इसको मैं 2 रूट से ना, तो फर्स्ट को मैंने 2 के बराबर पुट किया, इसको सेकंड के बराबर पुट किया। ओके कौन सा, चलिए कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। मैं इसको जैसे जस्ट अगर मैं x इज इक्वल टू इस वाली क्वेश्चन जो मेन इक्वेशन है उसमें आपको यहाँ पे अगर आप पुट करने की कोशिश करें, तो लेट से x इज इक्वल टू 4 हम क्लेम कर रहे हैं ना कि 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, 5 इंटू 4 प्लस 6, तो 16 माइनस 20 प्लस 6, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, क्या कहते हैं 16 माइनस 20 माइनस 4 प्लस 2, ये तो 2 आ जाएगा, तो 4 रूट नहीं है। चलें x इज इक्वल टू 6 को चेक करते हैं, 6 बिकॉज 0 आंसर आना चाहिए ना, लेफ्ट हैंड यहाँ पे मैं पुट कर तो सेटिस्फाई करना चाहिए। नहीं उसमें असल में देखें और वाली कंडीशन होती है ना, या तो 1 0 के बराबर होता है या तो 1 4 के बराबर होगा, तो और वाली कंडीशन निकालते हैं। हम हिट एंड ट्रायल से चेक कर लेते हैं, बिकॉज Z8 में 80 एलिमेंट है, तो 0 नहीं है। देखें 2 ऑलरेडी रूट है, 3 ऑलरेडी रूट है, 0 को हम लोग चेक नहीं कर रहे, तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज 4 हमने चेक कर लिया कि 4 रूट नहीं है। ओके नाउ वी कैन चेक 6 को चेक कर सकते हैं। 6 चेक करेंगे तो क्या आएगा 36 माइनस 5 6 30 एंड प्लस 6, तो क्या आंसर आ रहा है, तो 12 आंसर आ रहा है, और ये 4 के बराबर होता है। ये पॉसिबिलिटी भी चली गई है। नाउ व्हाट अबाउट 2 और चेक हो गया, 3 चेक हो गया, व्हाट अबाउट 5, अगर x को मैं 5 रह गया 7 रह गया, क्या 7 भी नहीं है। सो नहीं यहाँ पे इसके मोर देन 2 रूट्स कहीं ना कहीं आने चाहिए थे ना, ड्यू टू, अदरवाइज फिर मुझे किसी और इसको किसी और रिंग में इनके चेक करना पड़ेगा, बिकॉज हाँ अच्छा एक काम ये करें, इसको वाली एग्जांपल तो ठीक नहीं रही है, तो इसको हम लोग भी चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने आपने हिट एंड ट्रायल से चेक कर लिया, तो इसके Z8 में तो 2 ही रूट्स इसका मतलब आ रहा है, क्योंकि Z8 में हमने 5 पुट किया तब भी आंसर क्या आ रहा है 25 माइनस 25 प्लस 6, तो ये भी नॉन जीरो है, और 7 पुट करेंगे 1 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। तो चले हाँ
वही मैं कह रहा हूँ, चलें हिट एंड ट्रायल से चेक किए तो Z8 में प्रॉब्लम नहीं, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं Z12 में देखते हैं। तो इसका मतलब ये कि मैं असल में दिखाना चाह रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन वन रूट्स हो सकते हैं। तो इसी को अगर मैं Z12 में चेक करूं, इसको अब Z12 में इस सारी चीजों को चेक करते हैं। Z7 में तो इसके दो ही रूट्स होंगे फॉर श्योर। अब किसी एक नॉन इंटीग्रल डोमेन में इसके दैट से बात है, वो रूट्स होने की कंडीशन है, आप उसको फर्दर निकाल सकते हैं। अगर Z12 में चेक करें, चले अब Z12 कोई भी एक चीज में चेक करना है, तो Z12 में चेक करें तो अगर मैं x इज इक्वल टू 6 पुट करूं, तो x इज इक्वल टू 6 पुट करूं तो आई विल गेट एक्चुअली 36 minus 30 plus 6 which is equal to 12 and which is equal to 0. So x is equal to 6 is a root. In the same way, you can find one more root. क्या कहते हैं, अगर आप try to find, so at least now for this equation you can say कि इसके जो Z12x में इसके जो roots हैं as more than since Z12x, so ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये इंटीग्रल डोमेन होने के सारे, बट इफ यू आर वर्किंग इन इंटीग्रल डोमेन so you will find exactly two roots of a quadratic equation. So it is possible that a quadratic equation may have more than two roots if you are working in a polynomial ring which is not an integral domain. So this is the main thing. तो एक प्रॉब्लम है उसमें हर एक रिंग के ऊपर आपने इसके इन्वेस्टिगेट करना है इसके रूट्स को। तो इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है कि जस्ट ट्राई टू प्लग पॉइंट्स इन द इक्वेशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट के वो रूट है क्या। ओके क्लास, so thank you very much. अभी तो आपने